नमस्कार, मैं मनमोहन जिंदल, IBBI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. Today we shall discuss on SMA and NPA in the banks or financial institutions. So we all know that the term asset, stress asset is coming when a borrower is not paid his amount on due. So what is stress asset account? A borrower is required to pay the EMI, equitable monthly installment, interest, or installment at the periodical intervals as per the terms agreed at the time of availability. But in case EMI, installment, or interest due means that is due is not paid on or before the due date as per the agreed terms, such account is termed as stress asset. Suppose an installment is due on 30th January and it is to be paid before 5th of February. So after February, it is called, after 5th February, it is called stress asset. A simple example, in the other words, as soon as the installment is due, on the next day, it is overdue. So the difference between the due and overdue. Due means the principal, interest, any charges levied on the loan account which are payable within the period stipulated as per the terms of the sanction of the credit facility. Suppose a loan is installed in 10 installments. So a installment which is due on 31st January means it is to be paid on 31st January or before 31st January. That is a due installment. If it is not paid, that is called a overdue installments. So there is a slightly difference. Overdue means the principal, interest, any charges levied on the loan account which are payable, but have not been paid within the period stipulated as per the terms of sanction of the credit. जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस है बैंक की, वो कितने दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन में अलग अलग बैंकों का अलग अलग रहता है. In other words, any amount due to the bank under the credit facility is overdue if it is not paid on or before the due date as contracted between the bank and its customers. Just after the due date, if it is not paid, it is called overdue. Nowadays, borrower accounts are flagged as overdue as a part of day-end process for the due date, irrespective of the time of running such process. तो आजकल क्योंकि CBS है, एनीवेयर एनी वेयर बैंकिंग है, सो CBS में जैसे ही उसका डे एंड प्रोसेस होता है, उसी दिन उसको ओवरड्यू फ्लैग कर दिया जाता है. क्लासिफिकेशन एज स्पेशल मेंशन अकाउंट. Lending institutions, banks, or financial institutions will recognize the issued stress in the loan account immediately on default by classifying them as special mention. जैसे ही कोई डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट में या इंस्टॉलमेंट में, वैसे ही उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल दिया जाता है. मतलब ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसको रिगरसली फॉलो करने की जरूरत है. The basis of classification of SMA and NPA category will be like this. There are two types of facilities: loans other than revolving facilities
and loans in the nature of cash credit or overdraft called the revolving credit facilities. So revolving credit facilities are where underlying exposure, the borrower is permitted to vary the drawn amount and payment within an agreed limit under the line of credit. Example, credit card receivables and credit card facilities. Cash credit facilities. Sorry, I am sorry, very cash credit facilities. So where loan is payable in the installment, so up to 30 days of not paying an installment of the interest due amount, the account is called as SMA 0. If it is more than 30 days and between the 60 days, it is called SMA 1. For more than 60 days and up to the 90 days, it is called SMA 2. In the revolving credit facilities, it starts from the SMA 1. More than 30 days and up to 60 days, it is called SMA 1. And more than 60 days and up to 90 days, it is called SMA. We all know that after 90 days, it becomes non-performing asset. If interest and installment of the principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan, the accounts remain out of order as indicated below in respect of the overdraft or cash credit, or a credit card will be treated as non-performing if the minimum amount due as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the due date mentioned in the statement, or the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bill purchased and discounted. So these are the four categories. इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो 90 दिन के बाद एनपी हो जाएगा. आउट ऑफ ऑर्डर के लिए कुछ अलग शर्तें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्रेडिट कार्ड के ड्यूज अगर 90 डेज में नहीं दिया तो वो एनपी हो जाएगा. बिल कोई ओवर ड्यू नहीं दिया तो 90 डेज में हो जाएगा. The installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop season for short term duration crop. In agriculture में यदि उसने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है और वो 2 क्रॉप तक पैसा नहीं देता है तो वो एनपी हो जाएगा. यदि लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए पैसा लिया है और वह एक क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू हो जाता है तो वह एनपी हो जाएगा. The amount of liquidity facility remain outstanding for more than 90 days in respect of securitization transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India securitization of standard assets and direction 2021 के अंतर्गत दिया गया तो ये भी 90 days के बाद एनपी हो जाएगा. In respect of derivative transaction, the overdue receivables representing positive mark to market value of the derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment, तो ये भी एनपीए हो जाएगा. ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के मामले में हम ओवरड्यू इस तरीके से कहते हैं और इसको आउट ऑफ ऑर्डर भी माना जाता है. An account where the sanction limit have been renewed within 180 days from the due date or expiry of the ad hoc sanction where the account is not fully renewed. यदि 180 दिन तक यह रिव्यू या रिन्यू नहीं होता है तो इसको एनपीए मान लिया जाएगा. यदि कोई आदमी स्टॉक और बैक डेट स्टेटमेंट 180 डेज तक नहीं देता है तो इसको भी एनपीए मान लिया जाएगा. परंतु एनएससी के बारे में, विकास पत्रा के बारे में, किसान विकास पत्रा के बारे में, लाइफ पॉलिसीज को तब तक एनपीए नहीं माना जाएगा जब तक कि स्टिपुलेटेड मार्जिन मेंटेन हो रहा है. यदि स्टिपुलेटेड मार्जिन मेंटेन नहीं होता है तो इनको भी एनपीए मान लिया जाएगा. However, advances against gold ornaments, government securities and all other securities are not covered by this exemption. Now, what is out of order? The outstanding balance in the CC OD account remains continuously in excess of the sanction limit drawing power of 90 days.
एक सैंक्शन लिमिट मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए की करी और लगातार बैलेंस 1,05,000 रुपए चल रहा है 90 दिन तक, तो इसको अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मान लिया जाएगा और एनपीए में चला जाएगा। Outstanding balance in the CCOD account is less than the sanction limit drawing power, but there are no credits continuously for 90 days, or the outstanding balance in the CCOD account is less than the sanction limit drawing power, but credits are not enough to cover the interest debited during the previous 90 days. सो मान लीजिए एक आदमी को 1 लाख की लिमिट बनी हुई है, लेकिन उसने अभी 90,000 रुपए ही ड्रॉ किया है और उसको 90 दिन तक ब्याज लगता रहा है। मान लीजिए 5,000 रुपए ब्याज लग गया है। यदि 5,000 रुपए जितना भी क्रेडिट उसके खाते में नहीं आता है, तो इसको एनपीए मान लिया जाए। द प्रीवियस 90 days पीरियड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस shall be inclusive of the day for which the end process is being run. सो आजकल ओवर एंड अबव द 90 डेज नहीं होता है, 90th डेज को ही एनपी हो जाता है जब रात में शाम में उसका डे एंड प्रोसेस होता है, जिससे में कंप्यूटर डे एंड प्रोसेस करता है, तो 90th डेज वाले अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। पीरियोडिसिटी, द बैंक कैरी आउट एसेट क्लासिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एसएमए एंड एनपीए ऑन ए डेली बेसिस एंड ए कंटिन्यूस बेसिस। ये डेली देखना है और कंटिन्यूस देखना है। बोरोवर लेवल पे एसएमए और एनपीए को कैसी स्थिति है? SMA reporting is carried out at borrower level as per regulatory guidelines. Thus, overdue in any account of the borrower will result in reporting the borrower as SMA. मान लीजिए एक आदमी की 4 फैसिलिटी है और एक फैसिलिटी में अमाउंट ओवर ड्यू हो रहा है और एसएमए कैटेगरी में है, तो वो अकाउंट एसएमए में रहेगा, बाकी अकाउंट्स के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा। परंतु यदि एक अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो गया, तो उसके बाकी सारे अकाउंट भी क्लासिफाई एनपीए हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओवरड्यू स्टेटस इन द अदर। चाहे दूसरे अकाउंट बिल्कुल परफॉर्मिंग हो और उसके अंदर कोई ओवरड्यू स्टेटस ना हो, लेकिन फिर भी वो चारों के चारों डीम्ड एनपीए हो जाएंगे। यदि एक अकाउंट एनपीए हुआ, तो बाकी 3 अकाउंट डीम्ड एनपीए हो जाएंगे। क्या इंपैक्ट पड़ता है बोरोवर के ऊपर? As per the extant regulatory guidelines, the bank has to report the account as SMA or NPA to the Central Repository Information of Large Credit, क्रिलिक बोलते हैं इसको, Central Repository Information of Large Credit, Credit Information Companies from time to time which impact the credit history of the borrower. आप सबने सुना होगा कि आजकल सिविल स्कोर भी काफी मायने रखता है। जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उसको जल्दी लोन मिलता है और कम इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। जिसकी सिविल खराब हो जाती है उसको, और तथा उस कई बार उसके नियर एंड डियर को भी इस लोन लेने की स्थिति से की परेशानी से गुजरना पड़ता है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। काइंडली बिफोर, it is only for the awareness purpose. Before taking any action, kindly go through the regulatory guidelines of RBI and the respective banks or financial institutions. बहुत बहुत धन्यवाद।